ममालिक से आकर बसने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ़ जो है वो अक़ाइद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो हैं वो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, वो बहुत मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा एक माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि यहाँ की जो सोसाइटी है उसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। फिर इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ये हमारा प्रोग्राम है दिल अपना पाकिस्तान, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से जैसे हम पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करते हैं, तो दुनिया को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो फिर न सिर्फ ये कि आपको अपने सकाफ़त को दूसरों से रुशरास कराने का मौका मिलता है, बल्कि साथ ही दूसरों की सकाफ़त को भी जानने का मौका मिलता है। ये हम आपको मालूम है कि कनाडा में दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग, इवन अमेरिकन भी इमिग्रेशन लेते हैं यहाँ पे। वेरी सरप्राइजिंग। वैसे तो अमेरिका कनाडा के लोग ट्रैवल करते हैं बैक एंड फोर्थ, 6 महीने रह सकते हैं अमेरिकन कनाडा में आके, कनेडियन यहाँ पे आके, लेकिन बाकायदा इमिग्रेशन लेके भी कनाडा के आते हैं। कनाडा में हर तरह की मजहबी, सकाफती, कल्चर जो भी आप कह लें उसकी बड़ी आज़ादी है यहाँ पे। हाँ। तो इसी तरह ये मिनिस्ट्री भी है यहाँ पे, कल्चरल की मिनिस्ट्री है, कल्चर की और मल्टीकल्चरल की। तो उनके और जो मेलनी एक मिनिस्टर है यहाँ पे, ऑनरेबल मेलनी, वो आई थी यहाँ पे और हमने उनकी कवरेज की है। इस हफ्ते यहाँ पे जून 26 को दिन मनाया गया है मल्टीकल्चरलिज्म का, और बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अलॉन्ग विद कनाडा की बर्थडे के साथ, जो कि 150वीं बर्थडे आ रही है। बड़ी खूबसूरत बात है कि 1 जुलाई को इस मरतबा जो है वो कनाडा 150 साल का हो जाएगा, और 150 साल जो है वो बड़ा अच्छा एक बड़ा तवील अरसा है। तो यानी 1 सदी और डेढ़ सदी। तो इसकी जो सेलिब्रेशंस हैं वो पूरे कनाडा में जारी हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा हर तरफ बहुत सारे इवेंट्स भी इस हवाले से हो रहे हैं। हम अपने जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें उसको कवर भी करेंगे, और आपको जो है वो जो नए इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ये जो अभी इंतखाब साहब तज़किरा कर रहे हैं कि ये जो मल्टीकल्चरल डे मनाया गया और उनकी मिनिस्टर भी आई थी यहाँ पर, एक बड़ा अच्छा इवेंट हुआ और उनसे हमारी गुफ्तगू रही, बातचीत रही। तो बहुत ही एक एहसास होता है कि सबको साथ लेके इंक्लूसिवनेस का एक लफ्ज यूज होता है, इंक्लूसिवनेस का, कि सबको इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फीलिंग है कि आप, मैं, कोई भी एक बंदा जो है जो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ और 3 साल बाद सिटीजन बन जाता है, और सिटीजन बनने से पहले जब वो प्रॉपर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ही हैज फुल राइट्स, और ये वोट देना है तो 3 साल बाद उसे अलाउ होता है, लेकिन उससे पहले जब वो लैंडेड इमिग्रेंट होता है उसको वही राइट्स होते हैं जो दूसरे जी, जो यहाँ के जो यानी जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उसको भी वही राइट्स हैं जो कि सिटीजन को है, सिर्फ ये कि वो वोट नहीं कास्ट कर सकते। और जब आप एक अरसा गुजार लेते हैं तो सिटीजनशिप बन जाती है। सिटीजनशिप का लॉ भी जो है अमेंडमेंट उसमें हो गई है बहुत ज़्यादा, और इमिग्रेशन का लॉ भी बहुत अच्छा हो गया है। अब जो इनकी जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं वो भी जल्दी आ जाएंगी, तो बहुत अच्छा। करंट गवर्नमेंट जो है वो ह्यूमन जो फीलिंग्स हैं उनकी अपनी फैमिलीज के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, उससे बहुत सपोर्ट करती है। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिन्हें आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कनाडा में तो लोग उन्हें पसंद करते ही हैं, लेकिन दुनिया भर में वो अपने हुस्न अखलाक की वजह से जो है वो बहुत मशहूर हैं। और आप ये देखें कि वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाते हैं, चाहे वो उनकी इबादत गाहों में जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, बात करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये आपके अपने प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है। और दुनिया भर में इतने पॉपुलर हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उनके फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपती है। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो बात ये है कि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसीज हैं उसको लोग बहुत लाइक करते हैं, फिर उनको एज अ पर्सन लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इज अ वेरी काइंड मैन। उनकी गुफ्तगू सुने तो वो भी बहुत रीजनेबल बात करते हैं, उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। फिर दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब यहाँ पे सीरियन रेफ्यूजीज आए
تو وہ ان کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے. تو یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کے درد کو محسوس کیا, اور پھر وہ عبادت گاہ میں بھی جاتے ہیں, مساجد میں بھی جاتے ہیں, گرودوارے میں بھی جاتے ہیں. تو بہت اچھی روزہ کھولنے کی تقریب وہ زمین پہ بیٹھ کے کھولتے ہیں. ابھی ایک اور کسی ملک کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے یہاں پہ, تو وہ جو پکنک بینچ ہے اس پہ بیٹھے ہوئے لنچ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کوک کے کین 2 رکھے ہوئے, 2 برگر رکھے ہوئے, دیٹس دیئر لنچ. اور یہ ایک سمپلسٹی کی مثال ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ گورنمنٹ کے خرچے, بالکل لگتا تھا قائد اعظم کے اصولوں پہ کر رہے ہیں. کسی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی وہ چائے کا انتظام ہے, تو قائد اعظم نے کہا تھا چائے پی کے نہیں آیا گھر سے. تو آپ اندازہ کریں وہی چیز ہے کہ اتنا سمپلیفائی کرنا اپنی چیزوں کو کہ عوام کے پیسے کو غلط جگہوں پہ یوز نہیں کرنا. جی ہاں, بہت قابل تعریف ہے جسٹن ٹروڈو. اور بات ہو رہی ہے ملٹی کلچرزم کی. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. ویلکم بیک ناظرین, دل اپنا پاکستان میں ہوں امیر کے ساتھ آپ سے کینیڈا کی ڈائیورسٹی پہ, کینیڈا کے جو ملٹی کلچرلزم ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کی بڑی خوبصورتی ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں مختلف جو لوگوں کے ثقافتی ڈریسز ہیں وہ اکثر لوگ پہنتے ہیں, دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ہمیں. اور ابھی عید بھی گزری ہے, اور عید پہ جس طرح سے یہاں پہ ہمیں اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع ملا, دس از سمتھنگ ریئلی ویری بیوٹیفل. بالکل, ایسے ایسے خواتین کپڑے پہنتی ہیں کہ جس کا بہت خوبصورتی نظر آتی ہے, موقع ملتا ہے. آپ کے جیسے ابھی جو ہمارے نماز کے اجتماعات ہوتے ہیں وہ بھی ایک بہت زبردست ایک ہماری کمیونٹی کا ایک بہت اچھا میسج جاتا ہے, اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں عید کے موقع پہ کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی ایونٹ ہوا ہے 26 جون کو جو ملٹی کلچرل ڈے تھا, ہاں اس میلنی آئی تھی یہاں پہ, اور انہوں نے عید سیلیبریشن ایک گھر میں کی تھی, اور وہ اٹ واز اے آرگنائزڈ ایونٹ. بہت لمیٹڈ لوگ تھے لیکن سب کمیونٹیز کے لوگ تھے وہاں پہ. انہوں نے اپنی تقریر, میں نے اس کے گلمپسز لیے, ان سے انٹرویو کیا, شارٹ انٹرویو کیا, وہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے ناظرین. جی بالکل. تو میلنی, نائس ٹو میٹ یو ہیئر, اینڈ آئی ہیو few questions about your ministry, and one of the question is in Ontario what's happening is in the schools, the school district are not providing halal food for the Muslim kids, and they are saying this is the Canadian way that we can okay, so
we can do something about it, and about the food, because it's heritage and multicultural. Would you look into that? Well, of course, this is something that is much more at the provincial and municipal level. But at the federal government, we can always promote the importance of the Muslim community and their own heritage and ways of life. And certainly in the context of Canada 150 and everything we're doing in terms of multiculturalism, supporting the great, how can I say, the great heritage is important to our government, and always promoting diversity and inclusion. We should never take for granted the fact that we have a peaceful society, and every day we need to work on it. Thank you very much. Thank you for being here, and I need a short interview which you have done. Yes. And in future we'll do more. Thank you very much. It's a pleasure. Was a practicing lawyer, worked for two large firms in Montreal before that, or after that, worked for an international communications firm, right? So has a lot of experience at a very young age, and is one of the dynamic leaders in this government. So without further ado, I give you Minister Melanie Joly, the Minister for Canadian Heritage. First, I would like to thank the host and the entire family, Khan family. And I'm really happy to be here, of course. Assalamu alaikum. And Eid Mubarak. I have the chance to work and represent an important Muslim community in Multicultural, actually the biggest in Quebec. And it's always great to be able to celebrate with the community, especially at this important time. So I've had the chance to do many iftars, but it's my first Eid, so have the chance to be in Vancouver with you, and especially at the eve of such an important celebration, because tomorrow is actually Multiculturalism Day in Canada. It's every 27th of June, we have the chance to celebrate. And so in the context of Canada 150, we really wanted to make sure that we could celebrate the importance of multiculturalism and the importance of ultimately respecting one's identity and communities. And of course, this will lead up to the Canada Day event. And as mentioned, Vancouver will be an important place to celebrate. So, obviously high, it was about 69%, but Muslims were the highest at approximately 80%. 80% of eligible Muslims voted, partly in response to Harvard, but also there was a positive pull from the message from Justin Trudeau and the Liberals. And so there was a combination of things, and I hope that this is not, and we've seen actually an increase in our voter participation or in our engagement in the provincial election. So I think it's safe to say that it's something that's we're going to commit to. And and that's not even a question. Yeah, we have to, right? And so. Well, we've done it, and we'll continue to do it. That's not even a question. Yeah. Because the Liberals are at the core of the it's because of a Liberal government under Trudeau father that we came up with the Charter of Human Rights, and there has been a clear commitment towards the importance of multiculturalism, the importance of minority rights, of pluralism in general, and that will not change. That's part of the DNA of being a liberal and being a Canadian liberal. So that clearly not only won't change, but we want to be celebrating the importance of diversity. Of course.
Together, let's celebrate Canada 150. Visit our website to discover Canada Day activities near you. A message from the Government of Canada. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद और रिजवान सिद्दीकी फिर से यहाँ पे मौजूद है। दिल अपना पाकिस्तान की टीम यहाँ पे कवरेज कर रही है, तो हम चाहेंगे कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन करें यहाँ पे। तो उसके लिए मैं रिजवान सिद्दीकी से कहता हूँ ये लोगों को बुलाएं यहाँ पे और उनको इन्वॉल्व करें यहाँ पे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आप लोगों का प्रोग्राम है, ये आप लोगों के लिए सजाया गया है। तो अगर कोई भी मेरी बहन, मेरे भाई और कोई भी यहाँ पे बुजुर्ग अगर कोई पैगाम देना चाहे आप लोगों को और अगर कुछ गुनगुनाना चाहे, कोई लतीफ़ा, कोई नज़र, तो प्लीज़ स्टेज पे आ सकते हैं और हमारे साथ शरीक हो सकते हैं कि आप लोगों के लिए प्रोग्राम सजाया गया है। एक दफ़ा फिर दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत चांद रात मुबारक और कल की पेशगी ईद मुबारक। और नमाज के जो टाइमिंग है वो अभी तक हमारे पास 8 बजे की कंफर्मेशन है, जो 128 और 72 के कोने पे जो स्कूल है प्रिंसेस मार्केट स्कूल की ग्राउंड में, जो बहुत बड़ी ग्राउंड है वहाँ पे, और काफ़ी पार्किंग भी है वहाँ पे। तो 8 बजे नमाज के लिए आप अपना पहुँचें वहाँ पे, टाइम से पहले पहुँचें और प्लीज़ पार्किंग के लिए बिल्कुल बिहेव करें और दूसरों को रास्ता दें। प्लीज़ टेक द फ्लायर्स and mark your calendar for the 13th of August for Pakistan Festival. So we'll see you guys there. It's going to be fun. Thank you. थैंक यू वेरी मच अजीत साहब, ये अनाउंसमेंट किया था अपने पाकिस्तान फेस्टिवल के लिए। एक और लूप से आई है यहाँ पे, खासतौर पे बच्चों के लिए, बच्चों को तो बड़े भी खेल रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूँ। आजकल वो स्पिनर बहुत चल रहे हैं इंतखाब साहब, आपने देखा होगा। ये स्पिनर बहुत चल रहे हैं, बिल्कुल वो बच्चे इसमें बहुत बिजी हैं, बड़े भी छोटे भी। तो एक लूप से हमारे लेफ्ट हैंड पे लगी हुई है, स्पिनर दिखा रहे हैं, लूप से लगी हुई है आखिरी पहर में। जी, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने फूड ड्राइव करती हैं। गिविंग जो है वो इस तरह करती हैं कि समटाइम दे गिव फूड। अब रमज़ान में हमने फूड का मैंने वो गया मैं पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ने फूड ड्राइव की थी, वो हर साल करते हैं और मैंने उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं नाज़रीन सबको, तो देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। तो अरुण साहब, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान एंड योर Ramadan feast. What you guys are doing, as you can explain.
So Assalamu alaikum. This is the 11th annual Ramadan Spirit. It's sponsored by Pakistan Canada Association, Al Jamia Masjid, Vancouver. We've been doing this for 11 years publicly, but for many years before, during, and even after all of this. It's something that we call a continuum of caring. It's happened since the beginning of time and will go on until the end of time. People want to give to the people that need it. And alhamdulillah, there's a lot of people that need something, and we are that instrument to give it. So I'm very honored to be joined here by the Muslim Riders Association. These are brothers that are involved in many ways. They're enthusiasts, they love riding their bikes, but they're also in law enforcement as well, and RCMP with transit police and other things. And I'd like to introduce a brother here. As you can hear, we're in the downtown east side, so these sirens, they're not for show, they're not for fun. There's an overdose every 5 or 10 minutes here. There's a fentanyl crisis here. Over 1,000 people died of overdoses here. And there are neighbors, there are brothers and sisters, and they, just a wrong choice and they've passed away. But there's life-saving kits here, the first responders, the police, the ambulance. They work tirelessly to go and keep these people safe, and we're doing our bit to go and give them some healthy food to eat. So दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज अपने PCA के बहुत सारे जो पायनियर लोग हैं उनसे इंटरव्यू भी कर रहा हूँ मैं। तो आइए आज मलिक एहसान साहब से पूछते हैं। मलिक एहसान साहब ने पूरी ज़िंदगी आलमोस्ट अपने करियर के अलावा PCA में लगा दी है। तो मलिक साहब आज आप बताइए कि आप यहाँ पे किस तरह से लोगों को सर्व कर रहे हैं और इस फूड ड्राइव का क्या मतलब है? अब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था 10 साल रमजान स्पिरिट साहब आप बताइए कि आप यहाँ पे किस जज्बे के तहत यहाँ पे आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिल अपना पाकिस्तान और इंतखाब भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इधर अपना टाइम निकाल के इधर लेके आए हैं, कम्युनिटी को हाईलाइट किया है। आप देखें कि इस वक्त कम्युनिटी के बहुत सारे वॉलंटियर्स इधर मेन एंड हेस्टिंग स्ट्रीट पे सिर्फ फूड ड्राइव के लिए आए हैं रमज़ान में। ये इंशाल्लाह हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और इस साल भी इसी तरह जोश जज्बे के साथ कर रहे हैं ताकि उन्हीं लोगों को हम अपना दे सकें और शेयर कर सकें कि हमारी क्या फीलिंग्स हैं इसके साथ। इंतखाब भाई आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। दिल अपना पाकिस्तान आजकल कम्युनिटी में फेवरेट बनता जा रहा है। उसकी सिर्फ एक रीज़न ये है कि जिस जगह पे भी कम्युनिटी का कोई फंक्शन होता है तो ये लाजमी पहुँचते हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। सबसे आखिर में मैं कहूँगा कि सब लोगों को ईद मुबारक पेश की। दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज वसीम जावेद के साथ हैं। वसीम जावेद वॉलंटियर ग्रुप के एक बहुत ही बड़े वो पायनियर हैं यहाँ पे अपने लोगों के साथ अपने जो पाकिस्तान फेस्टिवल की ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है और इस साल भी पाकिस्तान फेस्टिवल हो रहा है और पिछले साल की तरह ही इस साल वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर में जैकपुर प्लाजा जो ओलंपिक टॉर्च है वहाँ पे हो रहा है फिर से और ये 13 अगस्त संडे को हो रहा है। इंशाल्लाह बच्चों के लिए काफ़ी इख्तिताम होगा। पिछली दफ़ा जो है तो कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चों के लिए इख्तिताम ठीक नहीं है तो इस दफ़ा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान डॉक्टर हुमा मीर और इंतखाब अहमद के साथ। और नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से पाकिस्तान